फिर खुशामदीद कहते हैं साहब। हिंदुस्तान के हवाले से जो मैंने 5-6 पॉइंट्स लिखे थे वो जिन पे मैं आपका ओपिनियन लेना चाहता था, लेकिन वक्त अब इतना कम है। एक मैं बात करना चाहता था कि जनाब जो हमारा इजाफी पानी उन्होंने रोक लिया, इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं। 11 अप्रैल से जो है वो इलेक्शन का आगाज़ होगा, 23 मई को जो है वो रिज़ल्ट आएगा। उनका प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे वो लोग बरसर इक़्तिदार आ गए हैं जिनकी टोटल तादाद 1 करोड़ से कम है, जिनकी सोच है शिद्दत पसंदाना। और ये मैं दिलचस्प आपको बात बता दूं, इनकी ये सोच हमारे लिए फायदेमंद है। अगर भारत सेक्युलर स्टेट रहेगी तो भारत एक मुल्क रहेगा। अगर भारत सेक्युलर स्टेट नहीं रहेगी, भारत एक मुल्क भी नहीं रहेगा। ये भारत को समझना होगा कि वो जो कर रहा है इलेक्शन के लिए, ये उसको सूट करता है कि नहीं करता। ये पाकिस्तान के लिए कोई नुकसान की बात नहीं है। हमारे साथ जहां तक लड़ने का ताल्लुक है, ये मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था, जिस दिन भारत का और हमारा शोडाउन हुआ और हमने उनके त्यारे गिराए। कल जी प्लीज, मैं ये सिर्फ ये बताना चाहता कि कल जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के मुताबिक पुलवामा हमले के बाद मोदी की जो मकबूलियत है उसमें 7% इजाफा हुआ है और अब वो स्टैंड कर रही है अराउंड 52% के ऊपर बतौर प्राइम मिनिस्टर जो है। अब जो बातें हो रही हैं वो ये है कि शायद इस किस्म की कोई और शरारत जो है वो मोदी करे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर से ही जो है वो लोग ये कह रहे हैं कि 7% इजाफा हुआ है, एक आध और हुआ तो फिर मुकाबला ही जो है वो नहीं रहेगा। तो आपने बहुत पहले कह दिया था कि वो ये जसारत नहीं करेगा, ये कोशिश बिल्कुल नहीं होगी। आप उस पर कायम हैं या आपको लगता है कि कोई हल्का फुल्का जो है वो कुछ कर सकता है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2-3 अच्छे काम किए हैं। उन्होंने और वो काम जो थे वो बुनियादी तौर पर जिस अंदाज से किए गए उससे मोदी को थोड़ी शय भी मिलती है, लेकिन हमने इंटरनेशनली अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश की है। एक OIC ने भी हमारी फेवर में बयान दिया है जिससे हमें तकवीयत मिली है। हमें ये वो टाइम है जब अपने आप को चौकस और चौकन्ना रखने की जरूरत है कि वहां पे वो कोई नया वाकया करवा के हम पे ना डाल सकें। बस हमें इतना देखना है। अगर हमारे कंट्रोल में कोई तंजीम है वहां पे तो हमें उसको कंट्रोल में रखना है, और अगर कोई नहीं है तो फिर हमें इंडिया के साथ जो हमारी DGMO लेवल पे गुफ्तगू है उसको मोर कॉन्फिडेंशियल करना है। ठीक, तो उनकी कोशिश ये है कि वहां पर जो भी रहे वो अपने आप को हिंदू कहे और वो उसको अपना गुलाम बना के रखें। ये वो चीज है जो शॉर्ट टर्म में तो उनके शॉर्ट साइटेड जो शिद्दत पसंद लोग होते हैं वो हमेशा इसी अंदाज से सोचते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इजराइल अपनी पूरी ताकत के बावजूद चंद लाख फलस्तीनियों को नहीं खत्म कर सका। ये क्या कर? ये 22 करोड़ मुसलमान है भाई। बिल्कुल ठीक, लेकिन आपके फायदे में है कि ना हमसे लड़े ना उनसे लड़े, उनको भी जीने दें और अपना सेक्युलर जो स्टेटस है जो कि आपके बड़ों ने प्लान किया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्लान किया था, जिस पे इंदिरा गांधी भी चली, आप उसी को बरकरार रखें। ये आपके फायदे में भी है, खित्ते के फायदे में भी है, हमारे फायदे में भी है कि जंगें नहीं होंगी इलाके में और ये ओवरऑल इलाका तरक्की करेगा। अदरवाइज खित्ते में अगर जंगें लगी तो ये 150 करोड़ इंसान है। 150 करोड़ इंसान को जब आपने जंगों में धकेला तो पहले तो जंगों की जो अमवात होगी वो करोड़ों में होगी, और फिर वो जो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि 3rd वर्ल्ड वॉर का तो मुझे नहीं पता कि वो किससे लड़ी जाएगी, लेकिन 4th वर्ल्ड वॉर जो है ना वो सोटियों से और पत्थरों से लड़ी जाएगी। दुनिया इतना तबाही की तरफ चली जाएगी कि 4th वर्ल्ड वॉर के लिए वेपन्स नहीं होंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये सोचने का मकाम है। मैं उसका वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। India has claimed that militant outfits of Pakistan planned and attacked this Pulwama attack. So how do you see this? I mean, they had a claim, and the Pakistan is taking very concrete actions against them. Although Pakistan says that the dossier that they have handed over, they are still examining that dossier and say that the proofs are not. I mean, the proofs are not so concrete that Pakistan could take some action on that. But still, they said that they are going to take concrete action, and nevertheless, it was part of the previous program. I mean,
The program was not fully implemented when the army public school thing happened, and they had a complete program. But part of the program was not implemented properly. And the short of it, this was one part that Pakistan should take, I mean, weed out and throw the militant outfit again. But next week can be, because I was hearing there was an alert outside that expect something of, but they can fight back. There are still rumors of war between India and Pakistan. And what do you say about it? I mean, it has not been ruled out totally. And next week can see, I mean, something on that. But generally, the cabinet was told by the Prime Minister that the threat of major war is behind us now. But till now, whatever India has claimed, it has been proved as false to some extent. For example, they claim that India destroyed F-16 of Pakistan, which was a wrong claim. So how do you see this? Because they're continuously claiming wrong things. I mean, it was major embarrassment for India. There is no doubt in it. But the next week, I mean, the India is big power, and universally the countries have interest in them. So they are looking from that lens. I would like to just ask you about current standoff between India and Pakistan. And India and Pakistan have history of standoffs. So what are your comments? Because it's not new. Well, frankly speaking, since the Modi government came into power, all hopes of progression in relations were actually buried, because there has been belligerence on the line of control. It reached new heights in 2013 when the Indian general is on record saying that we are in a state of mini war. And of course, you know that post-Uri, the situation worsened. And there were Mumbai attacks, and then there was Uri. So the relationship is in some ways hostage to the non-state actors. It is hostage to terrorists. Anything happens and it's back to square one. And all of this, I think, got escalated further when India is completely trapped into what is happening in Kashmir. And then, of course, Modi, who has lost the state elections, and the elections that are coming in the next 45 days, has ensued a whole new debate in India, and all of that just makes them more desperate. So the most recent development is the fact that they wanted to enter our waters today, and of course they were rebuffed. So they've tried the land, they've tried the air, and now they want to engage on the waters, which is of course a very dangerous game to initiate. But having said this, I think in the recent situation, Pakistan has acted with a lot of restraint, a lot of responsible restraint. This could have gone elsewhere. It could have escalated to a point. People were talking about war by blunder, and that could have become the reality of not just India, Pakistan, the whole of South Asia. And I mean, when nuclear-powered states are in such a situations, it's a source of worry for the international community. But, we know that there is a capability of India to carry out surgical strikes, and war limiting to Kashmir or line of control only. But do you see? I don't think India has the capacity to do surgical strikes. I totally disagree. This is what they claim. This is what they claim. But I just want to ask you, a surgical strike, they think, the military thinkers think that it will keep you in a limited warfare in or along line of control. Do you see any possibility of war escalating into the post-Uri, the surgical strike that India sort of orchestrated was a lie. And even in the Lok Sabha, in the Legislative Assembly, congressmen asked Modi to provide proof for it, and they could not. But what they do is that their propaganda machinery is extremely well oiled. So a year later, what Modi did was that he actually sent a notification through their High Commission to every university to celebrate this surgical strike post-Uri. And not only that, they had a Bollywood flick made on the same. So, but yes, we live in an era where there is fake news and there is this post-truth construct
which India uses very intelligently. But at the same time, I think India itself knows that it was a lie, and moreover, what has recently happened has exposed India's lack of military capability to a point which should be a source of concern for India. If you've looked at the New York Times article that has come out on India's capacity and capability, I think it should be a source of shame.